So good morning, guys. Today we are going to start with our new chapter, that is redox reactions. So now, what do you mean by redox? Redox is divided into rid and ox. From two words it is made from. It is rid means reduction of something, and ox means oxidation. Okay, now what does these two words mean? Redox and oxidation. Reduction is gain of hydrogen, and oxidation is removal of hydrogen. And it is also loss of oxygen. It is gain of oxygen. Reduction is loss of electrons and oxidation is gain of electron. Okay, so these two though you have studied in the 10th class as well. Now this topic is important from 10th basis, this one, this and this one. Now what some people even don't know, what is electrons, what is loss of electrons. So let's start. Just you should know about the valence electrons, that is valency. So if like magnesium has valency 2 positive, chlorine -1. So if any compound, like see, everyone knows number line, so let's draw it. 0, 1, 2, 3, -1, -2 is 3. So if we are going towards the left side, these numbers are getting reduced, so this is reduction. We call it as reduction. But if it is increasing, if it is an increasing order, we call it as oxidation. These are nothing else, but we can say these are increase or decrease in the valency. Okay, now what is oxidation? Like I will give you an example. Mg plus O2 gives MgO. Here the elemental state, like its valency is 0, and here its valency is -2. Okay, so it is getting reduced from 0 to -2, so hence it is reduction. Understand now what is, how to find the charges. Now I will tell you कि charges find कैसे करते हैं. This is an important topic. So first of all I'll tell you the charges. अगर elemental state है, like which it exists in the atmosphere, which type, किस तरह से वो एटमॉस्फेयर में है, उस टाइप का. जैसे H2 है, Cl2 है, और we can say it is oxygen 2 और सोडियम. these all are 0, इनका कोई चार्ज नहीं होता. बट इफ़ वी से लाइक MgO, तो इसमें हमें ऑक्सीजन का चार्ज फाइंड करना है. तो Mg का होता है +2, प्लस इसको हम ले लेंगे x, इसका ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं तो 0. Therefore the oxygen charge comes here -2. This way we can find the charges. This is the first example which I was showing to you, and the second one is like magnesium O4 negative. ठीक है, manganese, तो वो x plus, if we find to find manganese charge, तो 4 into -2, charge of oxygen is equal to their overall charge -1. Come here, is -1 plus 8, that is equal to 7. So this is the charge of this manganese, that is 7. Understand that?
Now I'm giving you some more examples for finding these charges, like SO3 2 negative sulfate ion. So it is, if we have to find the charge of sulfate, so 3 into minus 2, overall charge is minus 2. It comes x is equal to minus 2 plus 6, therefore x is equal to 4. Therefore this is the charge of the sulfate ion. You should know these things, these are important for the these are the basic things that you should know for this chapter. Now this redox reaction, important thing is balancing. Balance is an important topic. It of 3 marks. It usually comes in 3 marks. It is divided into 2 parts. ठीक है, it has 2 parts. जिसमें आएगा फर्स्ट मतलब we can balance an equation by 2 methods. That is oxidation number method, and second is we can do it by half cell, or another name for it is ion electron method. ठीक है, then they are further divided into 2 parts. One is for the acidic medium, one is for acidic medium, another is for basic medium. Here also one is for acidic and other is for basic medium. Now matlab all the steps are same, but there is a change in 1 or 2 steps in these. So let's start with the first balancing equation. That is, first we will do the oxidation and acidic medium question it is. So Cr2O7 2 negative plus 2 negative SO3 2 negative gives chromium 3 positive plus SO4 2 negative. The main thing what we have to do is, I'll write here the first step which everyone should know for doing this is finding charges. सबसे पहले हमें चार्जेस फाइंड करने होते हैं इन सब के. जैसे इधर क्रोमियम का क्या चार्ज होगा, इधर क्या होगा, इधर सल्फ़र का क्या चार्ज होगा, इधर क्या होगा. मतलब जो एटम डिफरेंट होता है उसके चार्जेस फाइंड करने पड़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेप. तो क्रोमियम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस Cr2O7 2 नेगेटिव का चार्ज होगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू माइनस 2, चार्जेस माइनस 2. Therefore x comes to be minus 2 plus 7 to the 14 and 2 is 12, 6. Here the charge of chromium is 6, so we will write here 6. Then comes the sulfate SO3 2 negative x plus 3 into minus 2. This 3 here multiplied with the charge of the oxygen, therefore it's minus 2. X is equal to minus 2 plus 3 to the 6. So x comes here to be 4. We'll write here sulfur charge 4. Now what about these? Chromium 3 positive. It's single. So it's positive charge 3 positive. We need not to do anything. But here it is a molecule, so we'll have to find it. SO4 2 negative. Okay. So charge of x plus 4 into minus 2 minus 2. Okay. So here x is equal to minus 2 plus 4 to the 8. So here it comes to be 6. Here the sulfur charge is 6. Now I will write this equation again and do other steps in this. Okay, so it is Cr2O7 2 negative plus SO3 2 negative gives Cr3 positive plus SO4 2 negative. These are the steps. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये था, ये वाला था. अब इसके हम ना चार्जेस लिख देते हैं. इसका चार्ज आया था 6, इसका 4, इसका 3 और इसका 6. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज इधर इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड बाय हाउ मच. इसका स्टेप क्या होता है, इसमें लिखना होता है यहाँ तक कि क्रोमियम है तो ये क्रोमियम है, इसको हम ऐसे करेंगे. पहले इधर सल्फर है, इसको ऐसे करेंगे. इट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ये जो 6 है ना, ये 4, इनको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर इसमें डिक्रीज़ हो रहा है 6 से 3, डिक्रीजेस
बाय 3 हर एटम पर एटम, ठीक है, हर एटम डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 पर एटम। सेकंड इधर देखते हैं, इधर 4 है, इधर 6 है, तो इधर लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखना, इधर एक क्रोमियम है, इधर सॉरी 2 है और इधर 1 है, तो दिस इज पर एटम ना, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ठीक है। दिस इज फॉर जस्ट फॉर बैलेंसिंग कि इधर भी 2 है तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। सो हियर वी गन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6 पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर एटम नहीं आएगा, ठीक है। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. If any has doubt can ask me in the comments. So now first step was this, that is finding the charges, ठीक है. Second step was oxidation number, this is the second step, ठीक है. You just learn these steps and you will know how to balance an equation. This chapter is very easy. Now the third step, 3, it is balance atom other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है. इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, इसमें तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को छोड़ के और सबको बैलेंस करना है. सो लेट्स डू दैट. Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, स्क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, chromium here 2, here 1, balance it by 2, 2 here, 2 here, so it is balanced. Now we come to the next step, step 4, that is finding the net charge. Calculate the net charges on both sides. अब नेट चार्जेस कैसे फाइंड करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा ना. सो नेट चार्ज क्या होता है, दिस ओवरऑल चार्ज, दीज आर द नेट चार्जेस, दिस वन, दिस एंड दिस, इनको नेट चार्जेस कहते हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिखेंगे. -2 इधर है, प्लस -2 इधर है. इधर है 3 2 जा 6, इसको जो बाहर जितना मॉलिक्यूल होता है ना, इसको हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस इधर तो कुछ नहीं है ना, तो इट इज़ -2. ऐसा होगा जी नहीं. ओह सॉरी, हियर आई फॉरगॉट वन स्टेप ही दिस से. हियर द मॉलिक्यूल इज 6 and here it is 2. So firstly we have to balance this and this equation. We'll do it by multiplying it by 3. These both sulfurs have to be multiplied by 3. तो here comes 3, here also comes 3, ठीक है. देन इसका चार्ज हो जाएगा 3 2 जा 6, तो -6, एंड इसका भी चार्ज हो जाएगा 3 2 जा 6, दैट इज -6. नाउ यू हैव टू फाइंड द ओवरऑल चार्ज, दैट इज -2 -6, here it is 6 -6, that comes to be 0, and here it is 8. Now since the charges are different, we have to balance the charges, which is the next step. Now the next step is step number 5, which is balance the net charges. We have to balance the charge. कैसे बैलेंस करेंगे इन्हें? बाय एडिंग, ऐड करना होता है हमें. क्या ऐड करेंगे? H पॉजिटिव फॉर एसिडिक मीडियम और बेसिक का अलग होएगा, इसलिए फॉर एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी वही समझाती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है. फॉर एसिडिक मीडियम जिस साइड पे रिक्वायर्ड है, ये नहीं कि एक ही साइड पे, ऑन रिक्वायर्ड साइड. अब ये भी मैं आपको बताती हूँ, आपको पता कैसे चलेगा किस साइड पे रिक्वायर्ड है. देखो इधर है चार्ज -8, इधर है 0, आप इधर ही ऐड करके देखो.
जैसे ये -8 है और ये 0 है, तो -8 इधर है और 0 इधर है, तो आपको किस साइड ऐड करना चाहिए? H पॉजिटिव होता है, तो अगर हम पॉजिटिव इधर ऐड करेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, सो वी विल शुड लेफ्ट साइड ही करेंगे, प्लस H पॉजिटिव, लेकिन कितने H पॉजिटिव? 8 H पॉजिटिव, ताकि 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बने? 0, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बैलेंस हमारे चार्जेस हो गए ना? गुड। सो now since the charges are balanced, now we have to balance these H positives which we have added. So let's write the equation, which is our last step for this balancing, which is step number 6. Now what we have to do in this step, that is balance H positive ion by adding required amount of water, required amount of water molecule. अब ये क्या हो गया, ये भी समझ नहीं आया होगा, सो लेट्स एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ आई टेल, अगर ये देखो, अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, इधर से देखो ये रही, तो ये जो वाली ये इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, इससे हमने चार्ज बैलेंस किया था, इसमें लेफ्ट साइड पे 8 H पॉजिटिव ऐड किए थे, तो लेट्स डू इट हेयर, दैट इज़ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव भी ऐड किए थे, गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ये हमने दे दिया था, ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। देन अब इधर देखो, इधर H पॉजिटिव कितने हैं? 8, और इधर H पॉजिटिव कितना है? 1 भी नहीं, तो हमें क्या ऐड करेंगे? इधर हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन कितने ऐड करेंगे वो हमने देखना है। एक वाटर में 2 तो होते ही हैं हाइड्रोजन के, तो इफ़ वी डू here 4, then 4 2s are 8, hydrogen would be balanced. So let's do it. That is Cr2O7 2 negative plus 3SO3 2 negative plus 8H positive gives 2Cr3 positive plus 3SO4 2 negative plus कितना वाटर मॉलिक्यूल्स? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अगर आपको है कि यार ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ऐसे बैलेंस हुई क्या नहीं। नाउ इफ़ एट द एंड योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इक्वल फ्रॉम इन द लेफ्ट हैंड द राइट हैंड साइड, देन यू कैन से दैट योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो नाउ लेट्स डू दैट। ऑक्सीजन हेयर इट इज़ 7 ऑक्सीजन हेयर प्लस कितने हैं इसमें? है नहीं ऑक्सीजन, है 3 3 9 हेयर प्लस और कोई ऑक्सीजन नहीं, इज़ इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12 प्लस 4, तो 12 प्लस 4 7 14 15 16 दिस साइड इक्वल टू 14 15 16 17 18 14 12 12 16 this side. So here for this and this, these are oxygen is itself balanced. If your equation is correctly balanced, then your oxygen molecules balances itself, so there is no need to balance. This is like correction, matlab checking that whether the balanced equation we have done is correct or not. Okay, thank you. This all for today.